Now, further going into this is the VMT, vestibuli, cochlear duct or medii and tympani. ठीक. अब ये जो V है vestibuli, ये between the membrane and the bone के बीच में है, and this directly connects to the oval window. Oval window का जो impulses है that stimulate this fluid. This fluid when it gets stimulated, ये एक वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है, जस्ट लाइक एनी वेव. वाटर जैसे स्टिमुलेट होता है वैसे ही स्टिमुलेट हुआ, एंड दैट स्टिमुलेशन विल इन टर्न स्टिमुलेट दिस बैसिलर मेम्ब्रेन. यहाँ एक मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज द बैसिलर मेम्ब्रेन. इसका मतलब स्टिमुलेशन जब V से होता हुआ एंड में एक जगह पे जहाँ पे V एंड T गेट्स कम्युनिकेटेड, दैट इज कॉल्ड एज हेलिकोट्रेमा. वहां से होता हुआ जब T में आएगा तो T जो है यहाँ पे वेव्स इस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगी. ये जब इस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगी, यहाँ एक दिख रहा है टेक्टोनियल मेम्ब्रेन, ये यहाँ और इसके बीच में ये हेयर सेल्स हैं. ठीक, ये हेयर सेल्स ड्यू टू शेयरिंग एक्शन मूव कर रहा है, तो आइदर इट विल बी ड्रैग्ड आउट और इट विल बी ड्रैग्ड इन. उस शेयरिंग एक्शन की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. ओके, सो दिस हैज what structures? This is the Reisner's membrane that separates the V from M, and this is the basilar membrane that separates the M from T. Okay, fine. Okay, now what is important in this slide is what are the cells responsible for generating those action potential. There are two types of cells. One is called as the inner hair cells and one is called as the outer hair cell. This is the inner hair cell and these are the outer hair cells. Okay. So what is the difference between the two? There is a tabular column in your book. Go through that. Broadly speaking, the inner ones are lesser in number. It is said it is present in a single column. The outer one is almost 3 to 4 times in number. We all know the ototoxic drugs that affect which type of hair cells? Inner or outer? Question भी आया था ना MCQ. Outer hair cells, ठीक है? तो that means the inner hair cells are more resistant and outer hair cells are less resistant. One is more, this is less in number, inner ones, the outer ones is more in number. The inner ones are more resistant, the outer ones are less resistant. This is phylogenetically developed earlier cells, the inner ones. That is why they are more resistant. And this one are phylogenetically developed at a later stage. Okay. And the inner hair cells are responsible for the auditory stimulus. And outer hair cells are responsible for the action of the inner hair cells. They modulate the function of the inner hair cells. So these are some of the differences between the outer and the inner hair cells. So now this is the most important part. How does the hearing functions then? Okay. So you need to understand a few concepts here. The first one is कि directly cochlea भी तो हो सकता था. Why the need of extraordinary canal, external ear, middle ear, then inner ear? Impedance matching. What is impedance? In just impedance is a terminology. In more simplified form, resistance. Many of you must be knowing this swimming. Swim करते हो ना बहुत कोई. So when we are inside the water, are we able to hear anything outside? Why?
because the velocity of the sound is different in air, it is different in water. किसमें ज्यादा होगा? वाटर में ज्यादा होगा, और उससे भी ज्यादा सॉलिड्स में होगा. वेरी बेसिक. तो जब लेसर डेंस से मोर डेंस में आता है, तो मोर डेंस के सरफेस से मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स गेट रिफ्लेक्टेड. दैट इज व्हाई 99% of the sound gets reflected and we are not able to hear anything from outside. तो कॉक्लिया के अंदर तो फ्लूइड है, बाहर है एयर, तो कैसे होगा? एयर से जो एनर्जी आया सब कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो देयर कम्स द रोल ऑफ द मिडिल ईयर. मिडिल ईयर हैज ऑसिकल्स. मिडिल ईयर में ऑसिकल्स है, एक्सटर्नल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है. कंबाइनिंग दीज टू स्ट्रक्चर्स, द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज ऑगमेंटेड. ऑगमेंटेड मीन्स अगर पानी के अंदर हमें कुछ सुनना है तो या तो हम बाहर से जो साउंड है उसे बहुत तेज करें, ठीक है, या तेज कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग सम फोर्स. एक कोई ऐसा डिवाइस हो जिससे ज्यादा फोर्स लगे जो ट्रांसमिशन में हेल्प करे. तो उसी में हमारा जो मिडिल ईयर है उसमें जो ऑसिकल्स हैं, दे प्रोवाइड सर्टेन लीवर एक्शन, बिकॉज तीनों ऑसिकल का साइज डिफरेंट है, तो एक मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है. ठीक है. जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका जो वाइब्रेटरी एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है, उसकी वजह से भी एक एडवांटेज मिलता है. मतलब the sound which has more amplitude but less force is transformed into a energy that has less amplitude but more force. Either less force था, at the end of the oval window it will have more force. ठीक है. तो this is called as the transformation या transformer mechanism of the middle ear or impedance matching by the middle ear. Impedance matching मतलब जो रेजिस्टेंस था कॉक्लिया का उसको मैच कर रहा है. अंडरस्टूड? तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व देयर? वन इज द वाइब्रेटरी एरिया ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. इट इज सेड कि अराउंड 55% और 55, व्हाट इज द एरिया ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? साइज क्या है पहले? साइज मेम्ब्रेन का साइज क्या है? 10 mm बाई 10/9. ठीक है. ओवल होता है तो वर्टिकल एक्सिस 10, हॉरिजॉन्टल एक्सिस 9. तो एरिया क्या हुआ? 90 मिलीमीटर स्क्वायर. जो 10 mm था 9 mm था. ठीक है. तो दिस इज 90 मिलीमीटर स्क्वायर. तो इसका इफेक्टिव वाइब्रेटरी एरिया है दैट इज फाउंड बाय कैलकुलेशंस इज अराउंड 55 मिलीमीटर स्क्वायर. ओके. दिस इज वन एरिया जिसपे साउंड इंपैक्ट कर रहा है. दूसरा ऐसा एरिया क्या है? ओवल विंडो. फ्रॉम द लास्ट क्लास कितना एरिया होता है उसका? 3.2 मिलीमीटर स्क्वायर. तो 55 बाई 3.2 दैट कम्स अराउंड 17 ऑड समथिंग. तो ये एडवांटेज है, 17 टाइम्स ऑगमेंट हो रहा है वो प्लस मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द ऑसिकल्स, दोनों कंबाइन होके that adds up to the impedance matching ratio. Understood? एक ये हुआ. दूसरा is phase difference. How does sound travel? It travels by in a waveform, crest and trough, or in other terms by compression and rarefaction. एक जगह कंप्रेशन होगा, उसके सब्सिक्वेंट रैरिफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रैरिफैक्शन. तो अगर एनर्जी मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक कर रहा है तो दैट इज कंप्रेशन. इट हैज टू गेट रैरिफाइड समवेयर, तभी तो कंप्लीट होगा. तो वेयर इट गेट्स रैरिफाइड? एट द राउंड विंडो. इसीलिए राउंड विंडो इज नेवर इन कॉन्टैक्ट विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. नहीं तो क्या होगा? compression at oval window also, compression at round window also. Net result is 0. ठीक है. This is what happens in a perforation. अगर बड़ा perforation हो गया तो उसमें सुनना क्यों कम हो जाता है? पहला,
कि ये जो एरियल रेशियो है ये डिस्टर्ब हो गया, इफेक्टिव वाइब्रेटरी एरिया चला गया ड्यू टू परफोरेशन। दूसरा फेस डिफरेंस, कंप्रेशन एट राउंड विंडो, ओवल विंडो, रैरिफैक्शन एट राउंड विंडो, वो भी चला गया क्योंकि जैसे ही परफोरेशन हो गया कंप्रेशन एट ओवल विंडो एंड कंप्रेशन एट राउंड विंडो सेम टाइम पे। अंडरस्टूड? तो दैट इज वाई मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट, मतलब फेस डिफरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर वी यूज दिस कॉन्सेप्ट, सपोज करो एक ऐसा डिजीज हुआ पेशेंट को जिसमें हमें मैस्टॉइड टेम्पोरल बोन को ओपन ही रखना पड़ रहा है, मतलब देर इज नो वे वी कैन गिव अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द पेशेंट। तो हाउ वी मेक द हियरिंग अ लिटिल बेटर देन वी आर डूइंग, टिम्पैनोप्लास्टी के टाइप्स पढ़े हैं आप लोगों ने? ओके, तो टाइप 4 टिम्पैनोप्लास्टी, उसमें क्या करते हैं कि जो राउंड विंडो है उसे हम आइसोलेट कर देते हैं, उसे हम शील्ड कर देते हैं। तो कंप्रेशन या रेरिफैक्शन एट ओवल विंडो जब हो रहा है तो राउंड विंडो गेट्स शील्डेड एंड द अदर थिंग हैपेंस एट द राउंड विंडो। तो द पेशेंट विल हियर समथिंग, जो बिल्कुल डेफ था दैट विल नॉट बी द केस। ओके, सो दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज फेस डिफरेंस। थर्ड कॉन्सेप्ट इज रेसोनेंस होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी? कितने लोगों को ड्राइविंग आता है? ठीक, तो जब आप क्लच छोड़ते हो कभी गाड़ी वाइब्रेट करता है बहुत तेज, वाई? व्हाट इज द रीजन? उन कंपोनेंट्स का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर गया है इंजन वाइब्रेशन के साथ, इसीलिए वो अपने मैक्सिमम वाइब्रेशन के साथ रैटल कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट दिस ट्रांसलेट्स हियर इज, हमारा जो ईयर है इसका भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेमैन टर्म में और सिंप्लीफाइड वे में कि दैट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच that organ has its maximum vibratory potential। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ऑसिकल्स का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो these three components has their natural frequencies at about 500 to 3000 hertz। ठीक है, 500 to 3000 hertz। लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल का 3000 hertz है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का 800 to 1600 हर्ट्स है, ऑसिकल्स का 500 to 1500 हर्ट्स है। तो जब भी साउंड इस फ्रीक्वेंसी में होगा तो हमें सबसे अच्छा सुनाई देगा। ह्यूमन ईयर कैन परसीव एज इट इज सेड 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, लेकिन दिस एंटायर रेंज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद डिटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट यूजफुल। ठीक है, तो जो स्पीच फ्रीक्वेंसीज है दैट वी आर यूजिंग इन डे टू डे लाइफ, दैट इज अंडर दिस 500 हर्ट्स टू 3000 हर्ट्स। इसीलिए जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री होता है ना, ऑडियोग्राम जो ग्राफ है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उसमें भी देखिएगा कि जो ग्राफिंग जो प्लॉटिंग होता है तो दैट इज डन अंडर दिस फ्रीक्वेंसी ओनली। 500, 1000, 2000, 4000, मैक्सिमम 4000 तक हम लोग करते हैं, क्योंकि दिस क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द स्पीच फ्रीक्वेंसी रेंज, दैट इज बिटवीन 500 to 3000 और 500 to 4000 हर्ट्ज। अबव दिस इज कॉल्ड एज हायर फ्रीक्वेंसीज। वो डिजीजेस को डायग्नोस करने के काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल somebody is having any metabolic disease that causes decreased hearing at some point of life, तो उस डिजीज के वजह से ईयर में कोई अफेक्शन हो रहा है या नहीं, हाउ विल गेट टू नो? बाय डिटेक्टिंग द हायर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, नॉट बाय दिस, द स्पीच फ्रीक्वेंसीज गेट डिस्टर्ब्ड एट द लास्ट, द हायर फ्रीक्वेंसी गेट डिस्टर्ब्ड एट द अर्लीस्ट। ये समझना है। So the pinna collects the sound, the extraordinary canal directs the sound to the tympanic membrane. So what is happening at the tympanic membrane?
द साउंड एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन समझो. पहला ट्रांसफॉर्मेशन एट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हुआ, साउंड टू मैकेनिकल. वो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको ऑगमेंट किया गया, इंक्रीज किया गया ऑफ अ लेस, मतलब पहले तो फोर्स कम था, एम्पलीट्यूड ज्यादा था, वहां ऑगमेंट हो रहा है, उसका फोर्स बढ़ाया जा रहा है. क्यों? ताकि कॉक्लिया को स्टिमुलेट कर सके, लिक्विड को स्टिमुलेट कर सके. तो दैट इज डन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन ऑफ द मिडिल ईयर. उसके बाद वो जो एनर्जी है दैट गोज इनसाइड द थ्रू द ओवल विंडो टू द, कहाँ गया? वेरी गुड, वेस्टिबुलाई में, स्केला वेस्टिबुलाई में. तो अब स्केला वेस्टिबुलाई जैसे मैंने पहले बताया, वेव लाइक उसमें ट्रांसफर हुआ जो एनर्जी था, मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट इन टर्न जब वो टिम्पेनाई में आया तो बेसिलर मेम्ब्रेन को मूव किया. फाइन. जब बेसिलर मेम्ब्रेन मूव हुआ तो वहां पे ड्यू टू शेयरिंग फोर्स बिटवीन द हेयर सेल एंड द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या हुआ? The mechanical energy is being converted into electrical energy. ठीक? And वो electrical energy is again transferred to the brain or auditory cortex. तो this is the मोटा pathway. हाँ, अब इसको थोड़ा रिफाइन पढ़ लेना और डिटेल में. एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें कि what is the pathway of hearing. ठीक है? तो there is a mnemonic called E. coli MA, Ma, E. coli Ma. E means 11th, sorry, 8th nerve, 11th बोला, 8th nerve. E, C for cochlear nucleus. There are two, ventral and dorsal cochlear nucleus. ठीक है? O for superior olivary nucleus. ठीक है? L लेटरल लेमनिस्कस. ठीक है? I inferior collicular. M medial geniculate body and A is the auditory cortex. Broadband area 41-42 किसका होता है? 41-42 किसका होता है? टेम्पोरल में 41-42 होता है. ऑडिटरी कॉर्टेक्स 21. ठीक, 41-42 पीछे होता है. आई थिंक सो ऑक्सीपिटल. देख लेना है, चेक कर लेना. दिस इज ऑडिटरी कॉर्टेक्स 21. ठीक है? सो अनदर क्वेश्चन इज, डज द दिस पाथवे वो यूनिलैटरल है और इट सप्लाइज टू द अदर साइड ऑल्सो? ये क्वेश्चन पूछा जाता है. अदर साइड ऑल्सो, बोथ साइड सप्लाई होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहां पे क्रॉसिंग होता है, जो एमसीक्यू में पूछा जाता है. एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस. ठीक है? एंड सम क्रॉसिंग्स आर देयर इन दिस कॉक्लियर न्यूक्लियस लेवल ऑल्सो, बट मेजॉरिटी इज देयर इन द इंफीरियर. कॉक्लियर न्यूक्लियस उसमें नहीं रहेगा, एमसीक्यू में नहीं रहेगा, इंफीरियर कॉलिक्यूला ही रहेगा. ठीक है? ठीक. अच्छा, now comes what are the theories of hearing, मतलब how this is the transmission and everything. A brief note on theories of hearing. There are 3 theories on hearing. Yeah? One is called as the resonant theory. Resonant theory मतलब as a name suggests कि somewhere resonance will be happening. तो ये जो मोशन है, wave like motion, ये resonant theory में आता है. Another theory is Rutherford theory. दैट इज रदरफोर्ड्स टेलीफोनिक थ्योरी कहा जाता है. उसमें कहते हैं कि कान जो है दैट एक्ट्स एज अ कंडूट ऑफ हियरिंग. सारा इंटरप्रिटेशन ब्रेन के लेवल पे होता है. और जो रेसोनेंट थ्योरी है उसके हिसाब से ईयर जो है दैट सेंसेस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट इज ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन. दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जो बैसिलर मेम्ब्रेन है, हाँ, बिटवीन
मीडिया एंड टिम्पेनी, ठीक। अब बैसिलर मेम्ब्रेन जो है उसको वाइब्रेट जो करेगा, अब बैसिलर मेम्ब्रेन थ्रू आउट द कॉक्लिया है, तो थ्रू आउट द कॉक्लिया अगर वो सेम इंटेंसिटी के साथ अगर वाइब्रेट किया तो फिर क्या फायदा हुआ? हाउ वी विल लोकलाइज द वाइब्रेशन? इट इज सेड, बुक्स में पढ़ा है तुम लोगों ने, कि बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया में 20,000 के आसपास का फ्रीक्वेंसी लोकलाइज होता है एंड एपेक्स के तरफ 20 हर्ट्ज की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये हो कैसे रहा है? दैट मीन्स कि देर इज सम डिफरेंस इन द बेसिलर मेम्ब्रेन, हाँ, कि वो इस पॉइंट पे 20,000 हर्ट्ज को डिटेक्ट कर रहा है एंड एपेक्स पे 20 हर्ट्ज को डिटेक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस? बेसिलर मेम्ब्रेन जो है प्रोग्रेसिवली चौड़ा होता चला जाता है, जो बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया में वो थिनेस्ट रहता है, उसके बाद वो हैवी होता चला जा रहा है। तो जब थिनेस्ट रहेगा उस समय उसका जो टेंशन है मैक्सिमम रहता है, इसलिए वो मैक्सिमम वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। दैट इज पॉसिबल, दैट इज 20,000 हर्ट्ज। एज इट प्रोग्रेसिवली एनलार्जेस, ठीक है, एंड गेट्स वाइडर, उसका वेट बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो टेंशन है वो कम हो रहा है, मतलब एक चीज को इतना बड़ा है, छोटे को अगर उतना बड़ा करके रखो तो कौन सा टाइट है? छोटा वाला, ठीक है। दैट इज वाई इट इज सेंसिंग मोर वाइब्रेशन, उसको मोर एनर्जी चाहिए। आगे जितना उतने ही चौड़ाई में जब वो टेंशन उसका कम हो जा रहा है तो वो लेसर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर रहा है। समझ में आया बात? तो इसीलिए more frequency is needed to stimulate the basal turn of cochlea as compared to the apical turns. तो ये है रेसोनेंट थ्योरी कि पर्टिकुलर पॉइंट पे रेसोनेंस हो रहा है। सपोज करो किसी का एकदम इट बिकम्स नॉन फंक्शनल एंड द अपाइकल वंस आर फंक्शनिंग, ठीक है, तो ही विल बी नॉट एबल टू हियर दिस 10,000 अपवर्ड साउंड्स, 10,000 हर्ट्ज अपवर्ड साउंड। ये मैंने क्या बोला? स्पीच फ्रीक्वेंसी क्या है? वो अगर इफेक्ट होता है तो उसको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होगा। अगर इसका मतलब वो अपाइकल टर्न के आसपास कहीं पर है, बेसिलर उसमें नहीं है। इसीलिए जब कॉक्लियर इम्प्लांट होता है ना, देयर इज अ प्रोसीजर विच इज डन इन प्रोफाउंड डेफ ईयर, कॉक्लियर इम्प्लांट, उसमें एक इलेक्ट्रोड को हम कॉक्लिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको सफिशिएंट लेंथ तक हम इंट्रोड्यूस करना होता है ताकि हम उस पिच फ्रीक्वेंसी वाले एरिया तक पहुंच सके। ये नहीं कि थोड़ा सा डाल दिए तो दैट विल बी ऑफ नो यूज। तो दिस इज सेकेंड पार्ट। अच्छा, वन मोर जो थ्योरी रह गया, दैट इज ट्रैवलिंग वेव थ्योरी ऑफ बेकेसे। 3 थ्योरीज हैं, हाँ, 3 इंपॉर्टेंट। एक हमारा क्वेश्चन भी आएगा कि इन्यूमरेट द थ्योरीज रिलेटेड टू हियरिंग, तो ये 3 तो आपको मेंशन करना ही है, ये बहुत बार आ चुका है थ्योरी पेपर में तुम लोग को। तो एक हुआ रेसोनेटिंग थ्योरी, दूसरा क्या हुआ? रदरफोर्ड टेलीफोनिक थ्योरी। उसमें क्या है? उसमें कॉक्लिया कोई काम नहीं करता है, बस साउंड को परसीव करके थ्रू द ऑडिटरी नर्व भेज देता है कोटेक्स को, कोटेक्स अपना उसको इंटरप्रिटेशन करता है कि कितना फ्रीक्वेंसी है, क्या है, ठीक है। जैसे टेलीफोन में क्या होता है? टेलीफोन कोई काम करता है? जो यूजर्स हैं वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, टेलीफोन बस ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए उसको टेलीफोनिक थ्योरी कहा जाता है। और थर्ड थ्योरी जो है दैट इज द बेकेसे थ्योरी। उसमें क्या है? वो बोल रहा है कि कॉक्लिया भी काम कर रहा है, कॉक्लिया के साथ जो कंडक्टिंग एपैरेटस है, जो नर्व है अप टू द ऑडिटरी कोर्टेक्स, ये पूरा एरिया इन्वॉल्व है साउंड प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो विच इज द मोर साउंड वन? द बेकेसे थ्योरी। उस पर नोबेल प्राइज भी है, 1961 में मिला था शायद, ट्रैवलिंग वेव थ्योरी। ओके, सो ये डायग्राम वही डिपिक्ट कर रहा है। ओवल विंडो पे वाइब्रेशन किया, इट विल मूव लाइक दिस थ्रू द हेलिकोट्रोमा टू द
स्केलर टिम्पेनी एंड आउटसाइड, यहाँ से डेसिपेट करेगा एनर्जी। जब ये मूव इन होगा तो ये मूव आउट होगा। दिस इज द फेज डिफरेंस। अगर ये मूव आउट नहीं हो पाएगा तो एनर्जी ट्रेवल ही नहीं करेगा। इसीलिए फॉर द साउंड टू ट्रेवल एंड साउंड टू बी हर्ड, दीज टू विंडोज शुड बी सेपरेटेड। ठीक है, यहाँ कैसे सेपरेशन है, मेम्ब्रेन के थ्रू, ऑसिकल्स के थ्रू ये बंद हो गया है, और यहाँ पे डायरेक्टली ओपनिंग इनटू द मिडिल ईयर। ओके, now coming to this vestibular system, the ampullated ends of the semicircular canals, they house a sense organ called as, अभी तो बोले, क्रिस्टा एम्पुलरिस। ठीक है, तो वो एक, देखो 3 सेंस ऑर्गन है यहाँ पे, एक कॉक्लिया हियरिंग का, उसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना। अब आ रहे हैं हम लोग बैलेंस पे। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल का कौन सा सेंस ऑर्गन है, क्रिस्टा एम्पुलरिस, एंड वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल का कौन सा सेंस ऑर्गन है, यूट्रिकल एंड सैक्यूल है, उसके पार्ट्स हैं, उसमें कौन सा सेंस ऑर्गन है, मैक्यूला। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। As I said, the semicircular canals, they detect what type of angular acceleration, ठीक, and the vestibule detects what, gravity या horizontal। ठीक, gravity कौन सा करता है, saccule, motion along the vertical axis and along the horizontal utricle। सिंपल याद रहेगा। तो दोनों सेंस ऑर्गन थोड़े से डिफरेंट हैं। कैसे, इसमें जो है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के एंड्स पे जो एम्पुला है, उसके अंदर जो है, दोज आर कॉल्ड एज द क्रिस्टा एम्पुलरिस। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें भी हेयर सेल्स हैं, 2 तरह के हेयर सेल्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, दोनों में एक फ्लास्क शेपेड होता है, एक सिलिंड्रिकल होता है, ये सब पढ़ लेना। वो एक सेल है, उसके ऊपर हेयर्स हैं, तभी हेयर सेल कहा जा रहा है। हेयर्स जो है उसमें से एक हेयर डोमिनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द काइनोसिलिया, एंड सब्सिक्वेंट, मान लो उसके ऊपर 4-5 हेयर्स हैं, तो पहला वाला जो डोमिनेंट है दैट इज कॉल्ड एज द काइनोसिलियम, एंड जो सब्सिक्वेंट है दोज आर कॉल्ड एज द स्टीरियोसिलिया। अब काइनोसिलियम एक तरफ होता है, या तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, एक तरफ होगा, उसके टुवर्ड्स स्टीरियोसिलिया मूव कर रहा है तो दैट इज पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट स्टीरियोसिलिया मूव कर रहा है दैट इज नेगेटिव। ऐसे वो डिटेक्ट करता है कि पॉजिटिव इंपल्स भेजना है कि नेगेटिव इंपल्स भेजना है। समझ में आया बात? ये हुआ तुम्हारा क्रिस्टा के अंदर जो सेल है, जो सेंस ऑर्गन है, वो उसके बारे में। दूसरा है मैक्यूला। मैक्यूला में भी ऐसे ही सेल्स हैं, लेकिन उसमें एक और स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज द ओटोकोनिया। नाम सुना है? कैल्शियम कार्बोनेट्स के पार्टिकल्स। ठीक है, तो हेयर सेल्स, उसके ऊपर जिलेटिनस मैट्रिक्स है, उसके ऊपर ये एक चादर के तरह दिस ओटोकोनिया फ्लोट्स। ठीक है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ओटोकोनिया? अगेन इट सेंसेस द वर्टिकल मूवमेंट और द लीनियर मूवमेंट। एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसमें ये ओटोकोनिया अपने जगह से डिसलॉज हो जाता है। मीनियस डिजीज, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। ठीक है, ये मूव कर जाता है किसी सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर, तो उसको फॉल्स इंप्रेशन ऑफ मूवमेंट होता रहता है, एंड द पेशेंट इज गिडी ऑल द टाइम्स, स्पेशली इन चेंजिंग ऑफ द हेड पोजिशन। वो अगर करवट भी लेगा तो उसका सर, माथा घूमेगा, उठ के बैठेगा, एनी हेड पोजिशन चेंजेस विल बी मिस इंटरप्रेटेड, उसको वर्टिगो होगा। ठीक है, यही है, यही सब। तो जस्ट अ रिकैप,
3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इनर ईयर बताओ। देखो इसमें अब गलती नहीं होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट जो भी है इट्स वेरी सिंपल येट वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आपने ठीक से इसको नहीं पढ़ा है, ये गलत हुआ सब गलत हो जाएगा, इसके बाद जो भी पढ़ाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है? कॉक्लिया, ठीक, वेरी गुड। इसका बोनी काउंटर पार्ट क्या है और मेम्ब्रेनस काउंटर पार्ट क्या है? कैनाल्स, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया, बोनी कॉक्लिया, ये बोनी पार्ट हो गया। मेम्ब्रेनस पार्ट क्या हुआ? डक्ट्स, यूट्रिकल सैक्यूल एंड कॉक्लियर डक्ट। मतलब डक्ट मतलब जो मेम्ब्रेनस पार्ट दैट इज डक्ट ना, एंड जो बोनी हाउसिंग है दैट इज कैनाल, सिंपल। ठीक, ओके। अब जो हियरिंग से रिलेटेड है क्या है वो? कॉक्लिया। उसमें कौन सा जो 3 चेंबर्स है कौन सा इंपॉर्टेंट है? स्केला, मीडिया, टिम्पेनाई और वेस्टिबुलाई में क्या होता है? कौन सा लिक्विड होता है? पेरिलिम्फ। दैट मीन्स जब हमारा वाइब्रेशन ओवल विंडो को स्टिमुलेट कर रहा है तो क्या स्टिमुलेट हो रहा है? वेस्टिबुलाई। तो क्या कौन सा लिक्विड स्टिमुलेट हो रहा है? पेरिलिम्फ। दैट मीन्स नेवर एंडोलिम्फ नहीं मूव करता है, मतलब एग्जाम में ब्लंडर मत करना, पेरिलिम्फ मूव करेगा, वो मूव कराएगा बेसिलर मेम्ब्रेन को, वो दैट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक, अच्छा, ये हो गया तुम्हारा हियरिंग वाला। बैलेंस में 3 जो कैनाल से जो उसके अंदर जो डक्ट्स हैं, क्या नाम है उनका? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। उनका कितने कैनाल है? 3 है। हर कैनाल का 2 ओपनिंग है, तो कितने ओपनिंग होने चाहिए? 6 होने चाहिए, लेकिन 5 ओपनिंग है। पोस्टीरियर एंड सुपीरियर कैनाल का जो ओपनिंग है वो दोनों कैनाल मर्ज होके सिंगल ओपनिंग करते हैं, उसको कहा जाता है क्रस कम्युनी। ठीक है, तो ओपनिंग्स आर 5 नॉट 6। द स्वेलिंग एट द एंड्स ऑफ द ओपनिंग आर 3। व्हाट आर दोस कॉल्ड एज? एम्पुला। उसके अंदर जो सेंस ऑर्गन है उसका क्या नाम है? क्रिस्टे एम्पुलरिस। व्हाट डज इट सेंस? At what angles the semicircular canals are located? Roughly 90 degree, not exact, roughly 90 degree. कौन सा axis of rotation stimulates the canal the maximum? Along the vertical axis. Horizontal canal का vertical axis ये है, मतलब कोई अगर इंसान ऐसे घूम रहा है तो उसका horizontal canal stimulate होगा। ठीक है, कोई अगर इंसान को ऐसे कर दो, वो ऐसे उसको घुमा दो, तो उसका vertical axis कौन हो गया? सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, वो स्टिमुलेट होगा। और किसी को अगर और थोड़ा तिरछा करके घुमाओ तो उसका पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल स्टिमुलेट होगा। ठीक है, इसका जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि हम जो निस्टैग्मस देखते हैं ना, आईज में निस्टैग्मस देखा जाता है। व्हाट इज निस्टैग्मस? दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द आई बॉल। ठीक है, तो किस तरीके का निस्टैग्मस है वो बता सकता है कि कौन सा कैनाल स्टिमुलेट हो रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस है तो लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल स्टिमुलेट हो रहा है। अगर रोटेटरी निस्टैग्मस है तो सुपीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल स्टिमुलेट हो रहा है। रोटेटरी में देखो आँख ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, होता है तुम्हारा ब्रेन स्टेम डिसऑर्डर्स में होता है। और अगर वर्टिकल निस्टैग्मस है तो उसका पोस्टीरियर कैनाल स्टिमुलेट होगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद है हम लोग, हाँ, वेस्टिब्यूल के अंदर कौन सा सेंस ऑर्गन है? मैक्यूले। उसका क्या खासियत है? उसमें क्या एक्स्ट्रा होता है? ओटोकोनिया। ओटोकोनिया इज ओनली प्रेजेंट इन द मैक्यूले, नॉट इन द क्रिस्टा। ठीक है, एंड व्हाट इज ओटोकोनिया? कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स। हेयर सेल्स के बारे में पढ़ लेना, यही है, उसमें कुछ है नहीं। देखने में कैसे होते हैं, और जो मैंने बताया काइनोसिलियम एक होता है, उसके साथ स्टीरियोसिलिया होता है। स्टीरियोसिलिया टुवर्ड्स द काइनोसिलियम मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, अगेंस्ट होता है तो नेगेटिव। ठीक, ओके, थैंक यू। Vitiligo is an acquired pigmentary disorder affecting the 0.5 to 2% world population where there are absence of the functional melanocytes.
So now, where the melanocytes are present? Melanocytes are present in the basal layer of the epidermis. You know the layers of epidermis. Epidermis has got the 4 layers from top to bottom. That is stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum, and stratum basale. Basal layer contains this melanocyte, and this melanocyte usually produces the pigment melanin, which produces or confers the color of our skin. So in vitiligo, it is an autoimmune disease where there is complete absence of the functional melanocyte. So there is destruction of the melanocyte, produces the complete depigmentation. It is an autoimmune disease. Have you idea regarding any autoimmune disease? What is autoimmune disease? Please. What is an autoimmune disease? Self become non-self. That is, the antibodies are particularly produced against the cell substances or a particular cell. That is, the antibodies are produced against the melanocyte, leads to complete destruction of the melanocyte. Family history is present near about 25 to 30% of the cases in vitiligo. It occurs in the both sexes equally and at any age group. Any age group can be affected in vitiligo, and less than 10% chance to develop the vitiligo in the children when the parents are affected. Less than 10% chance to develop the vitiligo. And disease do not do any harm to internal organ. It do not produce any harm to the internal organ. It doesn't produce any harm to the liver or any internal organ, but it produces a lot of psychological distress to the patient. It produces a severe depression to the patient, which comes to the patient, forces the patient to come to the dermatologist, which is most important thing. The disease does not do any harm to the internal organ. Disease does not do any harm to the internal organ, but produces a lot of psychological distress or depression to the patient, which force the patient to come to the dermatologist. Now the etiopathogenesis. What is the etiopathogenesis of vitiligo? Etiopathogenesis is complex. Exact pathogenesis is still not known. Several hypotheses and several formulas are postulated. It is an autoimmune disease. Both genetic factor and the non-genetic factors are responsible. Most important thing is that the pathogenesis are related to genetic, immunological, neural, and the self-destructive mechanism. There are several mechanisms are there which can give rise to this type of disease. First one is the autocytotoxic hypothesis. What is autocytotoxic hypothesis? Autocytotoxic hypothesis means the degeneration of the melanocyte due to accumulation of the hydrogen peroxide within the epidermis. And this hydrogen peroxide is very much toxic to the epidermis and leads to the destruction of the melanocyte, leading to this type of depigmentation. So this is the autocytotoxic hypothesis. Number 2 is the oxidative stress hypothesis. Oxidative stress hypothesis. What is oxidative stress hypothesis? There is an alteration of the antioxidant mechanism. And there is high superoxide dismutase level in the serum of the vitiligo patient, also found in the epidermis and also the melanocytes, and reduction of the catalase activity. Reduced catalase activity in the keratinocyte, melanocytes, and mononuclear cell. Reduced catalase activity. And whenever any types of superoxide dismutase level increases, you know it produces a reactive oxygen intermediate, which causes the destruction of the any types of the epidermal layer or the basal layer, lead to the destruction of the basal melanocytes, leading to the complete depigmentation. There are other hypotheses also that is self-destruction theory of the learner. And so whatever may be the cause, most important cause is the autoimmune hypothesis and autoimmune destruction, which leads to the destruction of the melanocyte, leading to the complete depigmentation. Now the associated disorder. So what are the associated disorder which is related to the vitiligo? So as I have already told, vitiligo is an autoimmune disease. So most of the autoimmune diseases are associated with the vitiligo. So what are the autoimmune diseases? Like autoimmune thyroid disease, mostly hypothyroidism, pernicious anemia, Addison's disease, alopecia areata, and also the autoimmune diabetes mellitus, which are associated with the vitiligo. But the most important thing is the autoimmune thyroid disease, which should be screened for each and every vitiligo patient. Autoimmune thyroid disease is the most common, and it should be screened in each and every vitiligo patient. That's why if a vitiligo patient comes to you, it should be serum TSH level and free T4 level should be done in each and every cases, because the autoimmune thyroid disease or hypothyroidism is the most commonly associated with the vitiligo. Please remember it. As it is an autoimmune disease, it may be associated with the other autoimmune disease, but the most important thing to be screened is the autoimmune thyroid disease.
Autoimmune thyroid is the most important thing to be screened out. Now the types of vitiligo. What are the types? Usually vitiligo is classified mainly the 6 types. In the different book, its classification is different, but mainly the 6 types of vitiligo are found. Which are the 6 types? Mainly is the localized vitiligo or focal vitiligo. Localized vitiligo or focal vitiligo. That is the localized patch of depigmentation is present either in the hand or feet or the face. Localized disease, that is the localized vitiligo. Number 2. Number 2 is the acrofacial vitiligo or lip tip variety of vitiligo. What is acrofacial vitiligo? That means the depigmented patch is present in the lip or the facial aspect, tip of the fingers and tip of the toes are mainly affected. This is known as the lip tip variety of vitiligo or acrofacial type of vitiligo. The third one is the segmental vitiligo. Segmental vitiligo is particularly present over a particular dermatomal segment. Usually doesn't cross the midline. Segmental vitiligo is most commonly found in the children. 20% cases is found in the children and only 5% cases it is found in the adult. Segmental vitiligo, which is the most important thing, is that it usually follows the dermatome. It usually never crosses the midline or doesn't cross the midline and more commonly found in children. Segmental vitiligo is more commonly found in the children. And number 4 is the generalized vitiligo. What is generalized vitiligo? That is the depigmented vitiliginous patch is scattered throughout the body. It may be present in the hand or feet or body or face. It is scattered vitiligo or generalized vitiligo. The depigmented patch can be present most of the body surface area. And what is then what is universal vitiligo or what is universal vitiligo? Universal vitiligo means the vitiligo affecting more than 70 to 80% of the body surface area. That is almost entire body surface area is vitiliginous skin is affected. It is known as the universal vitiligo. Universal vitiligo. And last one is the mucosal vitiligo. What is mucosal vitiligo? Mucosal vitiligo is the vitiligo which is present in the mucosal surface. That is the inner surface of the lip or maybe due to penile mucosa or vaginal mucosa. It is very difficult to treat. It is one type of resistant vitiligo which gives resistance to the treatment. Mucosal vitiligo. Usually 6 types. এই 6টা টাইপ মোটামুটি বলতে পারলেই হবে, ঠিক আছে? এই 6টা localized vitiligo, acrofacial or lip tip vitiligo, segmental vitiligo, generalized vitiligo, universal vitiligo and mucosal vitiligo. Now coming to the clinical features. How it presents? What is the clinical features? It is mainly characterized by the ivory white or chalky white depigmented macules or patch affected any area of the skin from face to toe, affected any area of the skin. Any idea regarding macules or patches? Have you done your clinical classes? What is macule? What is macule? What is patch? বলা তো উচিত এগুলো, মাইক্রোবায়োলজিতে পড়ে এসছে তো। ম্যাকিউল কাকে বলে? হোয়াট ইজ ম্যাকিউল? ম্যাকিউল ইজ ফ্ল্যাট স্কিন লিসেন, সাইজ লেস দেন 0.5 centimeter or less than 5 millimeter. Flat skin lesion is the macule. But then what is patch? Patch is usually flat skin lesion, size more than 0.5 centimeter or more than 5 millimeter with alteration of color. So patch size is comparatively larger. So you have to know the macules and patches. Some basic things you have to know. So vitiligo is usually asymptomatic. Usually doesn't produce any symptom, but sometimes patient complaining of the pruritus or itching. Patient may complaining of the itching. Depigmented hair may be present. Depigmented hair may be present, which is also known as leukotrichia. Depigmented hair, the vitiligo which affect a particular part of the hair, this is known as the leukotrichia and bears a poor prognostic sign. This is most important. Depigmented hair known as the leukotrichia, which bears a bad prognostic sign. So mostly you will find the depigmented macules and patches. It can affecting any part of the body, usually asymptomatic. Usually there is no symptoms, but sometimes patient may complaining of the itching and depigmented hair may be found, which is also known as leukotrichia, and this leukotrichia is usually a poor prognostic factor for the treatment, poor prognostic factor. Now, this is the facial vitiligo, the circumoral and the circumocular distribution of the depigmented patches. It is basically a facial vitiligo, localized vitiligo affecting mainly the face, around the eyes and around the oral cavity. This is known as the depigmented, this is the circumoral and the circumocular distribution. Circumocular and circumoral distribution. Now, the localized vitiligo, as I have already told, localized to the chin.
and also there are white hairs can be seen. White hairs can be seen. This is known as leukotrichia. This is known as leukotrichia. দেখতে পাচ্ছ? This is known as leukotrichia. So it is a localized vitiligo, localized to a particular chin and usually associated with the depigmented hair. This is usually a leukotrichia. This is the vitiligo affecting the acrofacial areas. A small girl, particularly 8 to 9 years girl, is presented with the vitiligo affecting the tip of the fingers and the tip of the toes, and also affecting the lips and the perioral areas. This is perioral area and lips affected. Tip of the fingers and tip of the toes and feet are affected. This is mainly distributed in the acral and the facial part. That is why it is known as the acrofacial vitiligo, or somebody called it the lip tip variety of the vitiligo. Now coming to the segmental vitiligo. Segmental vitiligo present in a particular segment, usually affecting a particular dermatome. It responds poorly to the medical treatment. Segmental vitiligo affecting a particular segments. And now coming to the differential diagnosis. So what are the differential diagnosis? Vitiligo moto dekhte kintu vitiligo noy. The hypopigmented or depigmented patch which is akin to vitiligo but not vitiligo. So differential diagnosis. What are the differential diagnosis? It looks like vitiligo but not vitiligo. So what are the differential diagnosis? Most important thing is the pityriasis alba. What is pityriasis alba? It is a hypopigmented patch present mainly over the face. Mainly affected age group as a 5 to 15 or 3 to 17 years of age group with mild scaling is present. No. Pityriasis alba. Pityriasis alba is separate thing. You are talking about versicolor. No, I am talking about alba. Pityriasis alba. It is a hypopigmented patch with ill-defined margin, mainly present over the face. Common age group affected is the 5 to 15 or 3 to 17 years of age group, associated with mainly atopic dermatitis. And one type of eczematous condition mostly found in the children with mild scaling is known as the pityriasis alba. The pityriasis alba is usually sometimes confused with vitiligo, but it usually, if you clearly see, the color is not so depigmented and mild scaling is also present, and it usually resolves with time. Just counseling is the most important part of treatment. Now coming to the hypopigmented pityriasis versicolor. What is hypopigmented pityriasis versicolor? Pityriasis versicolor or tinea versicolor, যেটা চুলি বলে বাংলায়। হ্যাঁ, it is basically caused by the superficial fungus, that is Malassezia species, Malassezia farfar or Malassezia globosa or Malassezia restricta. Mainly it affecting the stratum corneum. There is perifollicular hypopigmented macule. Perifollicular hypopigmented macule coalesce to form the big patches and produces the fine brawny scaling. Is mainly found in the pityriasis versicolor. It can mainly affecting the hair bearing areas, chest, back, hand, or any area can be affected, but mostly the diagnosis can be confirmed by the skin scraping with KOH mount preparation, which produces the spaghetti and meatball appearance, banana or grapes appearance. Mainly the KOH mount preparation gives the diagnosis, or you will find the fungus. So it is purely a fungal disease, a superficial mycosis, superficial fungal disease, which responds better to the antifungal treatment, both topical and systemic antifungal. So pityriasis versicolor can be sometimes confused with the vitiligo, but it is not a vitiligo. If you see, there is perifollicular hypopigmented macule, and this macule coalesce to form the big patches with fine scales are present, fine brawny scales are present in the pityriasis versicolor. Number 3 is the hypopigmented patches of the LL and BT Hansen's disease or leprosy. Borderline tuberculosis or lepromatous leprosy patient. So how it can be differentiated? First of all, leprosy, there is loss of sensation, loss of fine touch, loss of crude touch, loss of pain sensation, loss of temperature sensation, and also there is thickness of the nerve. Thickening of the nerve is the most characteristic. But in the vitiligo, there is no thickness of the nerve. There is no loss of sensation. But in Hansen's disease, you will find the loss of sensation. All the sensory sensation will be lost, like pin prick, like crude touch, fine touch, like temperature sensation, all will be lost. And also there is thickness of the nerve, which usually gives the diagnosis of the lepromatous leprosy or borderline tubercular leprosy. Number 4 is the albinism. What is albinism? Albinism is usually a genetic condition. It is an autosomal recessive condition, mostly caused by the deficiency of the enzyme tyrosinase. You know the tyrosinase enzyme. Tyrosinase enzyme is responsible for production of the melanin, mainly melanin production. So if there is a deficiency of the tyrosinase enzyme, there is loss of pigmentation, but it presents since birth, number 1. Number 2, it can affecting the hair also. The patient can give rise to the usually blonde color hair or brown hair,
and also depigmented patches are present, and also eyes are affected. Eyes are affected in the albinism. There may be patient complaining of the depigmentation of the iris, and also the retinal pigmentation is also reduced. There will be the nystagmus, reduced visual acuity, and patient may complaining of the severe sunburn in the light exposure or sun exposure, and also they can't tolerate the bright light. This is most important. If the albinism patient usually can't tolerate the bright light, this is the most important thing, and it's present since birth, and it is an autosomal recessive condition. So the family history is also very much important. And now coming to the nevus depigmentosa. What is nevus depigmentosa? It is a nevoid condition. So it is present since birth. First of all, it is a hypopigmented patch. Usually it doesn't enlarge in size, just it enlarges with proportionate to the body. There will be the serrated margin is there. Serrated margin is there, which is mainly found in the nevus depigmentosa. And now coming to the hypopigmented lesion of post-Kalajar dermal leishmaniasis. Hypopigmented lesion of PKDL. So there's obviously there will be the history of Kalajar. There will be limb hepatomegaly or splenomegaly, and also there is after post-Kalajar this type of hypopigmentation sometimes found, and particularly the patient may come from particularly geographic area, which is most important, and it helps to differentiate the PKDL hypopigmentation from vitiligo. And lastly, the chemical leukoderma, which is the most important thing. It's sometimes confused with vitiligo. So what is chemical leukoderma? So there are some chemicals, particularly the bindi or leather of the shoes, or particularly the sindoor or vermilion. Sometimes it contains the phenol or catechol or monobenzyl ether of hydroquinone. This type of chemicals, after the long exposure, it can produce this type of chemical leukoderma. So the history is the most important thing. Number 2 is the confetti-like macules, which is found in the chemical leukoderma. If you closely look, there will be confetti-like macules. And number 3 is the pattern is very much important. Suppose in the leather strip, the hypopigmented patch is present. It present like a strip of the leather, hypopigmented patch. Suppose in case of the bindi, or in case of the hypopigmentation is present just according to the lesion of bindi. So also very much important. So chemical leukoderma mostly is the history. Second is the long time chemical exposure, and third one is the confetti-like macule, which usually differentiate the chemical leukoderma from vitiligo. So these are usually the differential diagnosis. Other differential diagnoses are also there. This is idiopathic gutted hypomelanosis, piebaldisms are also there. Now coming to the treatment of vitiligo. So how will you treat the vitiligo? First of all, the diagnosis. You have to diagnose the patient. What is it? It is a vitiligo or other cause of hypopigmentation or depigmentation. A depigmented patch is present. Then you have to see whether it is a localized type of patch or generalized patch. The main aim of the treatment is to prevent the spread of the disease. And also repigmentation in the depigmented skin. First of all, to prevent the spread of the disease and repigmentation in depigmented skin. First of all, for localized vitiligo. If the localized vitiligo is present in the children and the adult, the main first line treatment, localized vitiligo means if it affecting the less than 20% of the body surface area, less than 10 or less than 20% of the body surface area, then you can call it the localized type of vitiligo. First treatment is the topical corticosteroid. Usually the potent steroid or class 1 corticosteroids are used, that is clobetasol or halobutazol. But in case of the face and flexural surface, mid-potent steroid like mometasone can be used. It is given once daily application for continuous 2 weeks, then 1 or 2 weeks steroid holiday to prevent the steroid atrophy. And usually 3 to 4 such cycles can be given. This is known as the topical corticosteroid, which are usually produces the local immunomodulator action. Now the topical calcineurin inhibitors. What are the topical calcineurin inhibitors which are used in the treatment of vitiligo? Topical tacrolimus ointment. The two strength are found 0.03% and 0.1%. And pimecrolimus cream, that is 1%. Topical calcineurin inhibitors are particularly given for localized vitiligo, that is vitiligo which is present in the face or neck area, and it usually given twice daily basis. It is usually given in the twice daily basis if it is given in a monotherapy for topical calcineurin inhibitor. Most important thing is the topical tacrolimus ointment can also be used in conjunction with topical corticosteroid. What means, suppose you have given the topical corticosteroid, say for example, you have given the clobetasol for once daily application for 2 weeks, then 1 or 2 weeks steroid holiday, and topical tacrolimus ointment you have given at night. Topical steroid have given in the evening, tacrolimus ointment given at the night for continue 4 weeks. And this type of cycles are given for continuously for usually 3 to 4 months to get the result. It produces the synergistic effect. So if you can give the topical tacrolimus ointment along with conjunction of topical corticosteroid, it produces the very good synergistic effect. But there will be no steroid atrophy, and also you will get the benefit of the both things, both steroid and calcineurin inhibitors. So it produces the synergistic effect. And lastly, the
topical puba therapy. What is topical puba therapy? Topical puba therapy is given for the localized lesion or less than, suppose the vitiligo patch is present in the dorsum of the hand or particularly foot, topical puba therapy can be given. It is usually given with the methoxylin solution. 0.1% to 0.1% methoxylin solution is applied to the particular area of the skin, and usually the patient, and after 30 minutes, usually patient is asked to expose the sunlight initially for 10 seconds, initially for 5 to 10 seconds. And then after each and every sitting, the exposure time can gradually increase 30 seconds, and to maximum exposure time will be 10 to 15 minutes. But the most important thing that you have to increase the exposure time slowly and gradually. And also there is high chance of development of phototoxic reaction or blister formation. So proper counseling is most important thing. Suppose you have given the topical puba therapy or methoxylin solution. You ask the patient to apply the particular topical methoxylin solution to particular area, and then you wait for 30 minutes, and sun exposure done for initially 10 seconds for once in a week, and then gradually 2 days week can be done, but not 2 consecutive days. And after that sun exposure, area should be covered with the broad spectrum sunscreen or protective clothing, which is most important for at least 12 hours. So most important thing is that you have to increase the time gradually. You have to increase the time gradually from 10 seconds to 30 seconds, 30 seconds to 1 minute, 1 minute to 1.5 minutes. Gradually exposure time can be done. Some of the dermatologists prefer to dilute the time. Instead of diluting the drug with water, some of the dermatologists prefer to dilute in the time to prevent the side effect, to prevent the phototoxic reaction, to prevent the blister formation. Now coming to the treatment for the extensive vitiligo in the adult. Extensive vitiligo means more than 20% of the body surface area involvement. Or if it is rapidly spreading or rapidly spreading disease, then what can done? Oral corticosteroid mini pulse therapy can be done. Oral corticosteroid mini pulse therapy or systemic corticosteroid pulse therapy. It is usually done with betamethasone or dexamethasone or methylprednisolone with 2 consecutive days in a week. That means Saturday and Sunday. 0.1 milligram per kg body weight for several months can be given to arrest the disease process. So most important is the oral corticosteroid pulse therapy, which can be given for the 2 consecutive days in a week, 0.1 milligram per kg body weight for Saturday, Sunday, say for example. But to arrest the disease process, it has to be given for the several months. But the most important thing is that you have to counsel the patient so that the patient should not discontinue the treatment, at least for 3 to 4 months or 4 to 5 months, depending upon the response. And when the disease is usually arrested or disease is stable, then other phototherapy can be done. Other immunosuppressive drug. Suppose the corticosteroid is contraindicated. Suppose patient have the diabetes mellitus or hypertension. You can't give the oral corticosteroid. In that case, other immunosuppressive drug like methotrexate once in a week methotrexate or azathioprine starting with 50 milligram per day for 7 days, and after that the CBC report or routine blood report, you can increase the dose. These are also done particularly to arrest the disease process. And now coming to the systemic puba therapy. Systemic puba therapy is also done for the extensive disease, but vitiligo must be stable. It is usually done for the stable vitiligo, and age of the child should be more than 12 years. And systemic puba therapy is usually done for the stable vitiligo, and age of the child should be more than 12 years. Now coming to the what are the extensive vitiligo, treatment of the extensive vitiligo in the children. Suppose the area is affected more than 20% and the disease is spreading, unstable vitiligo in the children. Suppose the age of the child is 5 years or 6 years or 11 years. Then initial treatment is the oral corticosteroid pulse therapy, like as already told in the adult, usually given with betamethasone tablet, 0.1 milligram per kg body weight with 2 consecutive days in a week for several months, 3 to 4 months, depending upon the response. And if the disease progression is arrested, then you can, for stable lesion, you can go for the narrowband UVB therapy. I am coming to the narrowband UVB therapy in detail. Now the systemic puba therapy. So what are the systemic puba therapy which is used for the treatment of vitiligo? Systemic puba means oral puba. First of all, it should be given in the not only extensive vitiligo but a stable lesion, and also the age of the child is the most important, which is, as I have already told, in more than 12 years. The patient is asked to take the oral soralin or 8-methoxysoralin. Tablet 8-methoxysoralin is given in a dose of 0.6 milligram per kg body weight. 0.6 milligram per kg body weight in a 2 days in a week, but not 2 consecutive days. Suppose for Sunday or Wednesday, Sunday or Thursday, but not 2 consecutive days in a week, between the 9 to 11 a.m. and after that 2 to 2.5 hours, the sun exposure is done. Ultraviolet sun exposure initially for 3 to 5 minutes,
and then exposure time will be gradually increased maximum up to 25 to 30 minutes. Maximum up to 25 to 30 minutes, which is the most important thing. Treatment, but it is a long process. Treatment must be continued for at least 6 months. Sometimes 9 months or 1 year needed. Treatment must be continued for at least 6 months. And during the sun exposure, eyes must be protected or rest of the days with UV protective glasses. So UV protective glasses are most important thing. But the puba therapy, the side effects are most important. What are the side effects of puba therapy? Most important is the nausea, vomiting. Patient may sometimes complain of severe nausea, vomiting. That is gastrointestinal side effect. Number 1. Number 2, long-term puba therapy can give a high chance of development of the cutaneous malignancy or squamous cell carcinoma. So you have to check whether any changes occur, or if already patient have any precancerous condition, you should not give the systemic puba therapy. Or the most important side effect is also elevated liver enzyme level. Elevated SGPT or SGOT level are also most important. So the side effect is the most important, and obviously the eyes should be protected with the UV protective glasses. And it is contraindicated in the children. It is contraindicated in children below 12 years of age, pregnancy and lactation. Why it is contraindicated in children? Because of ocular toxicity. Not only nausea, vomiting, because the anterior capsule of the lens is not fully formed in this age group. There is a high chance of development of the cataract formation or high chance of development of ocular toxicity. So systemic puba should not be given to the children, particularly below 12 years of age. So systemic puba, I have already told, it should be given in the generalized vitiligo, but vitiligo should be stable, and also the age factor is most important. It can be given from 12 years onwards or more than 12 years. Most important thing, you have to take the oral tablet, oral soralin or 8-methoxysoralin in the dose of 0.6 milligram, 0.6 milligram per kg body weight in 2 days in a week, but not 2 consecutive days. That is Sunday or Wednesday, Sunday or Thursday, and after 2 hours, sun exposure for done initially for 3 to 5 minutes, and then gradually exposure time will be increased. Gradually exposure time will be increased. This is most important. And you have to protect the eyes with the UV protective glasses in the rest of the during the time of sun exposure and rest of the days. Now coming to the narrow band UVB therapy. What is narrow band UVB therapy? Narrow band UVB is a special type of fluorescent light which particularly given for the, it is a very much effective treatment because lesser side effect is concerned. As you systemic puba, there are too much side effect, gastrointestinal side effect, hepatotoxicity. It can't be given in the children or pregnancy, but narrow band UVB usually produces the less side effect. It doesn't produce this type of side effect. In the starting dose ranges from the 100 to 50 millijoule per square cm square. Narrow band UVB, the wavelength is most important. Wavelength 311 nanometer. 311 nanometer. It usually starting dose ranges from the 100 to 250 millijoule per square centimeter, which is increased 10 to 20% at the each subsequent exposure. Each subsequent exposure 10 to 20% increase until the mild asymptomatic redness or erythema is achieved. Until the mild asymptomatic erythema is achieved. And there are lack of gastrointestinal, no nausea, vomiting, as you have already mentioned in puba, but here there is no lack of, no nausea, vomiting. Reduced phototoxic reaction, there is less chance of blister formation because you are giving the drug already to the particular brim, only narrow band UV, only particular wavelength area, only particular wavelength are given. This is more important. And no need for the post-treatment photoprotection, which is most important. As you have already mentioned, the puba therapy photoprotection needed, but in this case, no photoprotection is needed. It is safely used in the children, pregnancy, lactating women, and with the patient with the liver and renal dysfunction. Narrowband UVB therapy is the mostly used in the children, pregnant, lactating women with the patients of the hepatic and renal dysfunction with the more than 20% body surface area in case of the stable vitiligo. So narrowband UVB therapy is most important in the children. Suppose you have given the mini-pulse corticosteroid and the disease progression is arrested. After that in children, you have to give the narrowband UVB therapy. But most of the cases, facility is not available. The machine is not present. If the facility is available, it is the best effective treatment. But most important side effects are the pruritus and xerosis. Pruritus and xerosis, mild, xerosis means dry skin. That is xerotic skin, or sometimes the patient may complaining of the itching. So this complaint can be usually minimized by application of the emollient lotion, and also the narrowband UV therapies are done for the 2 days in a week, and subsequently 3 days of the week can be done, but it cannot do consecutive days. The most important thing, particular wavelength of light. So it is also very much effective treatment because the side effect is less, and it can be given a particular group, particularly in the pregnancy, lactating group, and also in the children. So narrowband UV therapy is effective treatment. Now coming to the other part of the treatment, segmental vitiligo. As I have already told, segmental vitiligo usually responds poorly to medical treatment. We can try the medical treatment, that is topical steroid or topical tacrolimus ointment, but it usually produces not a good treatment of segmental vitiligo. Usually it poorly responds to medical treatment.
there are many surgical options are there. That is mini punch grafting. Mini punch grafting can be done, but vitiligo should be stable for at least 1 year. Before doing any surgery, please remember the vitiligo must be stable for at least 1 year, and age of the patient should be more than 12 years. Age is also a factor, and usually it is the graft is done usually taken from the healthy donor side, usually from thigh, particularly usually 2 mm or 3 mm punches are taken from the healthy donor side, and from the vitiligo area, these grafts are usually harvested. It is an autologous process, so there is no chance of infection also. But usually it should be done in a particularly localized area of the vitiligo, and that is segmental vitiligo. If it is localized, and also it should be done if the vitiligo should be stable for at least 1 year. Should be stable for at least 1 year, and age of the patient is also important. Age of the patient should be more than 12 years. So usually segmental vitiligo responds poorly to medical treatment. Now coming to the other aspects of treatment, that is the excimer laser. Excimer laser usually emits the wavelength of 308 nanometer wavelength, and excimer laser produces the best result for the localized vitiligo, for the localized or focal vitiligo, particularly the vitiliginous skin affecting the face and neck. Particularly the vitiliginous skin affecting the face and neck. In that case, you can do the excimer laser. Excimer laser also can be done in 2 days in a week or 3 days in a week. But the most important thing is that if vitiligo should be focal vitiligo or localized vitiligo, and cost is also a very important factor. Now the camouflaging. What is camouflaging? The various color shades are particularly in a resistant type of vitiligo. If it is present in the visible areas of the body, several color shades can be given, like potassium permanganate or indigo carbene. Several color shades are painted in the vitiliginous skin to temporarily hide this depigmented skin, for temporarily hiding of the depigmented skin. So camouflaging can be done. Camouflaging can be done for particularly localized areas of the vitiligo, and particularly the exposed side, cosmetically sensitive areas of the side, it can be done. And usually shades are matched with the normal skin and placed on the lesion to produce the immediate cover up. It helps to hide the vitiligo temporarily. It is not a permanent treatment. And now the psychological support. Psychological support is the most important aspect of the treatment. Suppose a child comes to the vitiligo, most important thing, he or she should be counseled regarding the nature of the disease, and every patient should be counseled to come as early as possible. If the lesion is localized lesion, they should come as early as possible, and they should become every hypopigment or depigmented patch is not vitiligo. It should be counseled to the patient. So proper counseling and proper consultation with the dermatologist is the most important. And number 2 treatment, vitiligo can be, most of the vitiligos, though some vitiligos are resistant to treatment, but the most of the vitiligo can be cured if they come to the dermatologist. So there is no need to, first, so psychological support is the most important thing or most important aspect of the treatment. The treatment aspect which I have not covered, that is the newer aspect of treatment. What is newer aspect of treatment? Particularly topical and oral JAK inhibitor, that is the janus kinase inhibitor. Nowadays are used extensively in treatment of vitiligo. What is janus kinase inhibitor? Janus kinase is particularly a particular substance which inhibit the JAK pathway of the inflammation, particularly inhibit the inflammation of the T lymphocytes and also apoptosis of the T lymphocyte. That is tofacitinib. The drug name is the tofacitinib. Oral tofacitinib and topical tofacitinib ointment on gel formulation. It can be used. Topical tofacitinib can be given for the localized vitiligo, and oral tofacitinib can be done for the more than 18 years of age for the generalized vitiligo. It can be given for janus kinase inhibitor. And one thing, in case of the universal vitiligo, if the most of the body surface area is affected, suppose 80% or 90% of the area is affected, then it do not respond to the treatment. In that case, you have to, if the 5 to 10% islets of normal skin is present, and that islets of normal skin to be converted to the depigmented skin with the help of the cream or lotion, that is monobenzyl ether of hydroquinone. It can be done. In case it is done particularly for universal vitiligo, and patient must be counseled before doing it, and it usually takes a long time, for 6 months to 1 year or sometime 9 months. So it can be done. Previously, we talked about wrist joint. Today we will be learning about elbow joint. So this topic is important because this is a guaranteed question that will be appearing in your practical exam. Guaranteed question. কেউ না কেউ এটা পাবে। ঠিক আছে? তো সেই জন্য আমরা এটাকে ভালো করে শিখতে হবে কিভাবে ইন্টারপ্রিট করতে হয়। So this is from the identification chapter, and the question would be to estimate the age from the skygram or the X-ray. To estimate the age from the skygram or the X-ray of whatever joint it may be. It could be wrist joint, it could be
elbow joint, it could be pelvis. Okay, so somebody will be receiving any of the x-rays and one has to estimate the age from it. So previously, those who have attended the classes, you might have learned about the wrist joint, but today we will be learning about the elbow joint. So the starting question will be, what does this slide show? ठीक है? What does this slide show? What is this slide about? So you have to answer the question in a scientific manner. So what would be your answer? So this should be your answer. It is a sciagram of left or right elbow joint, in which view and what bones you are viewing. Okay. So as it states here, it is a sciagram of left or right elbow joint in anterior, posterior and lateral view of a male or a female, and showing the distal end of radius, distal end of humerus and proximal end of ulna and radius. ঠিক আছে? proximal কিংবা ওই তোমরা ওটা upper end বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, but you have to mention it as it is. Okay, so note it down. কপিতে লিখে নাও, এক্সামে কিন্তু আর এটা কেউ বলে দেবে না, ঠিক আছে? So this in your exam you have to write in the heading part বলে heading লিখতে হয় না, just you have to mention as it is a sciagram of a whatever joint it is, এইভাবে শুরু করবে লেখা ফার্স্ট পার্টে, যেমন আছে ওইভাবেই, ঠিক আছে? জাস্ট ওই রাইট আর লেফটে দুটো লিখবে না, যে কোনো একটা লিখবে, হয় লেফট কিংবা হয় রাইট, ঠিক আছে? আর ভিউটা তো ঠিক আছে, ওই সেম হবে। এটাকে আগে লিখে নাও তোমরা, এই যে লাস্ট এই যে পোরশনটা। সো দিস উইল বি ইয়োর স্টার্টিং আনসারিং পয়েন্ট অফ দিস এক্স-রে। যে এক্স-রে যখন তোমরা আনসার করবে, প্রথমে এই লাইন দুটো বলতে হবে, ঠিক আছে? বোঝা গেল? তো এলবো জয়েন্টের জন্য এই দুটো লাইন। যদি এটা রিস্ট জয়েন্ট হতো তাহলে ওখানে আমরা কি করতাম? হোয়াট উড ইউ রাইট? দিস ইজ এ স্কায়াগ্রাম অফ left or right wrist of male or female, ঠিক আছে? showing carpal bones এগুলো, ওটা হতো রিস্ট জয়েন্টের জন্য, কিন্তু আমরা এখন এলবো জয়েন্ট করছি, তো এলবো জয়েন্টে কি কি আমরা দেখতে পাচ্ছি ওগুলো লিখতে হবে, ঠিক আছে? হয়ে গেল। এটা হলো ফার্স্ট পার্ট, যেটা তোমরা এক্সামে খাতাতে লিখবে, ইট ইজ এ স্কায়াগ্রাম বলে শুরু করবে, ঠিক আছে? এবার সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে, আচ্ছা এখানে তোমরা দেখে নাও, how the centers of ossification appear while all of them are fused, ঠিক আছে? এখানে এই যে বোনসের যে সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার গুলো আছে, এগুলো সব ফিউজড, অলরাইট? এটা নর্মাল এক্স-রে, ঠিক আছে? প্রসেস, ঠিক আছে? এখানে ফিউশন হয়নি, গ্যাপ আছে, appeared but not fused, appeared but not fused, ঠিক আছে? ওলেক্ট্রন প্রসেস, এটা রেডিয়াল হেড, appeared but not fused, ঠিক আছে? বোঝা গেল? এই দিকের গুলো ফিউজড আছে, বাট কোথায় কি কি আছে সেটা দেখতে হয়। রেডিয়াল হেডের উপরে ক্যাপিটুলাম থাকে, ক্যাপিটুলাম এখানে থাকে, এদিকে কি থাকবে? ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, ঠিক আছে? আর এইদিকে কি আছে? এটা আলনা, আলনার প্রসেসটা একদম উপর পর্যন্ত যায়, একটা শ্যাডোর মতন মনে হয়, ঠিক আছে? আর এইদিকে এই ট্রক্লিয়া আছে, ট্রক্লিয়ার পাশে থাকবে মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ঠিক আছে? এটা মিডিয়াল এপিকন্ডাইল থাকে, ঠিক আছে? আর একটু ভালোভাবে দেখবো। Here also you can see it is much clear কোথায় কি কি আছে। তাহলে রেডিয়াল হেডের উপরে ক্যাপিটুলাম থাকে, আর যেদিকে যে অ্যাঙ্গেলটা করছে ওটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড। ডোন্ট কনফিউজ মিডিয়াল এপিকন্ডাইল ফ্রম ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল while answering x-ray, ওটাই মেজরলি সবাই মিস্টেকটা করে। এটা মিডিয়াল সাইড, এটা ল্যাটারাল সাইড, ঠিক আছে? যেদিকে ডিভিয়েট হয়ে আছে কিংবা যেদিকে আলনা আছে ওটা হবে মিডিয়াল সাইড, আর যেদিকে রেডিয়াস আছে সেটা হবে ল্যাটারাল সাইড।
ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার age and order of appearance of secondary ossification centers in elbow joint. ঠিক আছে? So here we have a mnemonic CRITOE. ঠিক আছে? So C stands for capitulum, R stands for radial head, I stand for internal epicondyle or medial epicondyle. ঠিক আছে? Internal or medial epicondyle. আর T stands for trochlea, O stands for olecranon process, and E stands for external epicondyle or lateral epicondyle. ঠিক আছে? So I and E are being substituted for medial and lateral epicondyle. I internal or medial epicondyle, E external or lateral epicondyle. ঠিক আছে? বাইরে দিকে। ঠিক আছে? বোঝা গেল? পজিশনিং গুলো দেখে নাও কিরকম দেখাচ্ছে, বোঝা গেছে? এইবার দেখো এজ অ্যান্ড অর্ডার অফ অ্যাপিয়ারেন্স এর হিসেবে প্রথমে ক্যাপিটুলাম অ্যাপিয়ার্স এট 1 year অফ এজ। ঠিক আছে? তারপরে আসছে রেডিয়াল হেড অ্যাপিয়ার করছে 4 to 5 years। তারপরে আসছে ইন্টারনাল এপিকন্ডাইল আর মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ওটাও 4 to 5 years। ঠিক আছে? তারপরে আসছে টি ট্রকলিয়া 8 to 9 years, বাট সামটাইমস উই assume it to be 10 years, মানে ইন্ডিয়ান পপুলেশনে ওটা 10 years। ট্রকলিয়া TRO ট্রক, সো T is for 10 এটা 8 to 9 কিংবা 10 ও বলা যেতে পারে। ঠিক আছে? এইবার হচ্ছে আর কি আছে, টি পর্যন্ত এলাম, ও আছে ওলেক্ট্রনন প্রসেস এখানে অ্যাপিয়ার বলছে 8 to 9 years in international charts, but in Indian population it is olecranon process appears at 9 to 12 years of age in females and 2 years more in males. Okay, so Indian population Indian মানে Bengali population 9 to 12 years for females olecranon process এইটা, for international it's 8 to 9 years. Okay, তাহলে হয়ে গেল ওলেক্ট্রনন প্রসেস। এবার বাকি আছে এক্সটার্নাল এপিকন্ডাইল আর ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল ওই 10 years, ওই একদম এইদিকে লাস্টে। ওকে, সো there is a deviation in this mnemonic for Indian population where the what do you say, this order is little bit changed. We'll discuss that in while we'll estimate the age. Okay, this is natural order, but for the Bengali population only 2 parameters, means those appearance is changed. We'll talk that later on. Okay, normally this is the order of age of order of appearance. This is what we just discussed earlier in this slide. So as you know, you have learned this, means you saw this image before, so you can compare this with the previous one also. Okay, so let's start with the second part, that is the finding part. ঠিক আছে? finding part in this image you can see all these ossification centers are fused, এগুলো সব ফিউজ করে গেছে। ঠিক আছে? এখানে কোনো গ্যাপ নেই। এই যে এপিফাইসিসের পরে এই যে মেটাফাইসিস যেটা গ্রোথ প্লেট আছে, এখানে কোনো গ্যাপ নেই, এটা ফিউজ হয়ে গেছে, কোনো ব্ল্যাক লাইন কি কিছু গ্যাপ নেই। ঠিক আছে? দিস আর অল ফিউজ সেন্টার্স, and what we are talking about is secondary ossification centers. These are secondary ossification centers, not the primary ones. Primary ones are already they appear more earlier, okay, and fuse also. Only they appear in the shaft. Okay. So what are the findings we should know? মানে কি relevant জিনিসগুলো দেখতে হবে, তার থেকে আমরা এজ এস্টিমেট করতে পারবো। সো দি ফাইন্ডিং শুড বি, কি লাগবে আমাদের, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, ওলেক্রনন প্রসেসের টিপ অ্যান্ড হেড অফ রেডিয়াস। দিস 4 প্যারামিটার্স উইল গিভ আস দি এজ। কি আছে, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল,
tip of electron process and radial head. ঠিক আছে? So these will either appear, if appeared, they may fuse or they may not fuse. Okay, so these things you have to write in your exam also. ঠিক আছে? ফার্স্টলি তোমরা লিখলে হোয়াট ইজ দিস ইজ এ স্কাইগ্রাম, তারপরে যা 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 আছে ওগুলো অ্যান্টিরিয়র পস্টেরিয়র ভিউ, মেল না ফিমেল, ওগুলো লেখার পর সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে এই ফাইন্ডিংস, এক্স-রে ফাইন্ডিংস। ঠিক আছে? এক্স-রে ফাইন্ডিংসে আমরা কি কি দেখবো? মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, টিপ অফ ইলেকট্রন প্রসেস আর হেড অফ রেডিয়াস, যেগুলো অ্যাপিয়ার করেছে কি করেনি, আর যদি অ্যাপিয়ার করে থাকে ফিউজ করেছে কি করেনি। ঠিক আছে? So you have to make this table in your exam also. So it's better you note it down. Okay, note it down. So while you note it down, this whole thing. While you note it down, we'll talk about another thing, that is this chart. This chart is known as gallstone chart. Previously also we have discussed this while we were learning about the bones, age estimation from the bones. So this is gallstone chart, Galstaun. Okay, gallstone. The spelling is important. So who was Gallstone? He was an anthropometrist and he studied the Bengali population and got this anthropometric data. Okay. যেহেতু আমরা বাংলায় আছি সেজন্য আমরা এই চার্টটা ফলো করব। when you go to other state they will have their own charts, but the parameters will not change. Parameters মানে তুমি ইউপিতে যাও, বিহারে যাও, or any south or north, the points will be the same. We'll see the medial epicondyle, lateral epicondyle, then electron process. Only thing that will change is the chart. ঠিক আছে? The values will change but the parameters will remain same. This part, elbow joint. এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে elbow joint এর জন্য। ঠিক আছে? elbow joint এ medial epicondyle, lateral epicondyle, tip of electron process, radial head দেখাচ্ছে। এইদিকে মেল, এইদিকে ফিমেল। ঠিক আছে? মেলস এর জন্য একটা আলাদা ভ্যালুস, ফিমেলস এর জন্য একটা আলাদা ভ্যালুস। মেলস দের ভ্যালুস আর ফিমেলস দের থেকে 2 years, almost 2 to 3 years more থাকে। So if you remember one set, means if you remember the female ones, then it would be easier to remember, at least estimate the male ones, because it is almost 2 to 3 years gap is there. So best is to remember the female ones. Okay. তো লেখা হয়েছে ওই এক্স-রে অফ এলবো জয়েন্টের এক্স-রে ফাইন্ডিংস এ কি কি আছে ওগুলো লেখা হয়ে গেছে তো এই দিকটা। ওকে, সো নাও is this chart visible to you? Is this chart visible to you in the back, those who are sitting at the back? No. If it's not visible to you, take out your mobile phones and type their gallstone chart. The chart will appear in your mobile. ওকে, এটা বার করো গলস্টোন চার্ট তোমাদের মোবাইলে। GALSTAUN, গলস্টোন চার্ট। এরপর আমরা we will estimate the age from this x-ray. ঠিক আছে? গলস্টোন চার্ট খোলা হয়েছে। So the few first important things that we should know while answering is, which hand is it and what sex it could be? Anybody can guess what would be the sex and which hand it is? এটা কোন হাত আর মেল না ফিমেল? right hand. Okay, suppose if I flip the x-ray, then can you make it out? No. So if in exam such slides come to you, you will in your answer assume that it is of a female and of right hand. Okay, that will make things easier. Female, assuming it as female, and that of right hand. Okay, ঠিক আছে? So
এবার আমরা দেখব কি কি দেখতে হয়। রেডিয়াল হেড, রেডিয়াল হেড, রেডিয়াল হেডের উপরে ক্যাপিটালাম, এদিকে ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, এদিকে মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ঠিক আছে। ওলেক্রোনন প্রসেস, এই চারটে জিনিসই লাগবে, ঠিক আছে। সো assuming it as female, so radial head appears at 6 years, তাই তো? রেডিয়াল হেড appears at, গলস্টোন চার্টে দেখো, তোমাদের আছে তো মোবাইলে, ফিমেলটা দেখবে। রেডিয়াল হেড appears at 6 years, okay, and medial epicondyle appears at 5 years. কিন্তু আমরা ওই যে একটা নিমোনিক পড়লাম CRITOE, ওখানে আমরা কি দেখেছিলাম যে রেডিয়াল হেডের এইটা অ্যাপিয়ারেন্সটা মিডিয়াল এপিকন্ডাইলটা আগে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওই চার্টে আমরা দেখেছিলাম রেডিয়াল হেডটা আগে হচ্ছে, ঠিক আছে। ওইটাই একটা অ্যানোমালি আছে যেটা আমি এখন বলে দিলাম। সো ফর দিস চার্ট, অ্যাকর্ডিং টু দিস চার্ট, গলস্টোন চার্ট, the radial head appears earlier than, the medial epicondyle appears earlier than radial head, okay. Medial epicondyle 5 years, radial head 6 years, ঠিক আছে। এবার এটা দিয়ে আমাকে এস্টিমেট করে বলো কি এজ হতে পারে। Medial epicondyle appeared above 5 years. Medial epicondyle fused, not fused. গ্যাপ আছে, ঠিক আছে, গ্যাপ আছে, less than 14 years up till now. ফার্স্ট প্যারামিটারটা দেখছি যে 5 ইয়ার্সে অ্যাপিয়ার করে গেছে, তো up till now it's above 5 years, below 14 years, ঠিক আছে। সেকেন্ড প্যারামিটারে কি বলছে, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল অ্যাপিয়ার্ড হয়েছে, lateral epicondyle has not appeared, okay, so less than 10 years, ঠিক আছে। tip of olecranon has appeared, so above 9 years, ঠিক আছে। so radial head তো আমাদের দরকার নেই, আমরা কাছাকাছি পেয়ে গেছি। কি পেলাম তাহলে? above 9, below 10, ঠিক আছে, বোঝা গেল। above 9, below 10 কি করে এস্টিমেট করতে হয়, যারা বুঝতে পারেনি তাদের আবার আরেকবার করছি। ফার্স্টলি উইল টেক দি ফার্স্ট প্যারামিটার, দ্যাট ইজ মিডিয়াল এপিকন্ডাইল appears at 5 years for females, so appear করে গেছে but has not fused, so above 5, below 14 on the first parameter. Second parameter, lateral epicondyle এইদিকে হয়, appear করেনি, so it's below 10, যখন অ্যাপিয়ারই করেনি তো ফিউশন করবে কি করে, ঠিক আছে। সো below 10, এবার টিপ অফ ওলেক্রোনন প্রসেস অ্যাপিয়ার করেছে, তাই তো। সো অ্যাপিয়ার করছে কখন? 9 to 12 years of age. So the subject or this female will be above 9 years and below 10 years, ঠিক আছে। above 9, below 10, কোনো ডাউট আছে? ক্লিয়ার? কি কি দেখতে হবে? রেডিয়াল হেড, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, টিপ অফ ওলেক্রোনন প্রসেস, এই চারটে প্যারামিটার দেখলেই আমাদের এজ এস্টিমেশন হয়ে যাবে। only thing is the difficult part is memorizing this chart, okay. চলো এবার নেক্সট এক্সরেটা করি। আচ্ছা, so another thing is how to write the opinion, okay, how to write the opinion, you note it down, wait, opinion, how to write the opinion। প্রথমে তোমরা হেডিং লিখলে, তারপরে তোমরা ফাইন্ডিংস লিখলে,
তারপরে লিখবে হচ্ছে opinion. The third part is opinion. So opinion টা আমরা কিভাবে দিই? So the wordings are important. So these wordings will remain same anywhere you go, any subject you take. Sometimes the cases will come from the periphery or from anywhere where you are posted. If you are an orthopedician, it will surely supposed to come if you take orthopedics, because means recently the trend has changed that the X-ray age estimation is coming. Means these cases are referred to the orthopedicians, okay, for age estimation. So it's nothing like that. Only orthopedician, it comes to us also. And even you're in your MBBS students, if you not students, you pass your MBBS and posted in PHC, the cases might come to you also if there is nobody else. So you should know the pattern how to write this. After this, we'll learn about writing injury report and all also. Then MCCD, how to write the means what you call cause of death and all. Okay, later on we'll learn all those. So today's class, you should know how to write the means how to estimate the age and write it down. So প্রথমে এলো কি heading part, X-ray finding part, and third is the opinion part. So we have to write it like this only, taking into consideration of the findings of the available centers of ossification around elbow joint. The age of individual is above atho and below atho years. The whole statement should be stated, not just like this. You should not state like that in your exams also, that the subject's age is this to this. You have to write all those things, okay? So it's better you note it down. লেখা হয়েছে? So now try to estimate the age of this subject. So as there is nothing mentioned as L or R, so we'll assume it as right hand and of that of a female. So all of you take a fresh page, and as I told you, the order of writing, try to write it in the same manner. Okay, just try and we'll calculate the age. Okay, do it. It's your task. Take a fresh page, start writing from, it is a skygram of elbow joint. Okay, then you write the findings and then you write the opinion. So if there is doubt, means wherever you have noted down, take it, copy it from that portion, so that it will be your practical or your what do you call লেখনি anterior posterior or lateral view. Okay, so this is a skygram of left elbow joint in anterior posterior and lateral view. Right assume karo, right female, right করে করবে। এক্স-রে তে যখন আমরা এক্সামে দেব হয়তো ওখানে রাইট আর কিংবা এল লেখা আসবে। So this is your practice. This is one of your practice. Practice it from this slide. হচ্ছে, you can take help of your friends also if you are not able to do yourself. This is capitulum. Okay, lateral epicondyle not appeared, medial appeared, not fused. Okay, tip of olecranon process not appeared. এবার এস্টিমেট করো, সব প্যারামিটারস গুলো বলে দিলাম। 6 to 9 years. How you got 9 years? Fine, just
let's start with the first parameter, medial epicondyle. Okay, medial epicondyle has appeared but not fused above 5. Okay, radial head appeared but not fused, so 6, above 6 years. Fine. Now coming to lateral epicondyle. Lateral epicondyle has not appeared, so below 10, above 6, below 10 till now. Then comes tip of olecranon process has not appeared, so it will be below 12. Okay, when there is a bracket 9 to 12 and we have to answer below, we'll take the above figure. যদি 9 to 12 থাকে, 9 to 12 থাকে আর আমাকে বিলো বলতে হবে, তাহলে আমরা বলবো বিলো 12। ঠিক আছে, 9 to 12 এ যদি থাকে আর যদি আমাদের বিলো বলতে হবে তাহলে আমরা বলবো বিলো 12, নট বিলো 9, বিলো 12। তাহলে গ্রেটার দ্যান 6 and less than 10। ঠিক আছে, why less than 10? Because it is here, it is 9 to 12. Okay, so we have a better parameter over here, that lateral epicondyle appears at 10, so it has not appeared. ওদিকে আমরা 12 আছে, 12 এর থেকে তো কম আমরা 10 টা পাচ্ছি, তাই তো? তাহলে 6 above 6, below 10। ক্লিয়ার হচ্ছে তো? ওকে, বোঝা গেল কিভাবে করতে হবে। এটা প্র্যাকটিস করলে it will become easier. So we'll now take few more cases. Tip of olecranon process এই lateral view এ দেখতে পাবে, কিন্তু এখানে নেই। ঠিক আছে, appear করে হচ্ছে 9 to 12 years in females। তো নেই হলে কি করবে, মানে যখন তোমাকে যদি বলে নেই, তাহলে তোমার অন্য প্যারামিটারস গুলো দেখবে। এইটুকু আমরা বুঝে গেলাম যে ওটা বিলো 12 ইয়ার্স হবে। ঠিক আছে, এবার কাছাকাছি প্যারামিটার গুলো কি আছে, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলের অ্যাপিয়ারেন্স। তো ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল তো অ্যাপিয়ার করেনি, করেছে কি? করেনি, তাহলে বিলো 10 ইয়ার্স হলো। বোঝা গেছে? চলো আর কয়েকটা কেস আছে, ওগুলো করে নি। মেল ফিমেল কিছু দেওয়া নেই, তাহলে আমরা অ্যাজিউমিং ইট অ্যাজ ফিমেল। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ফিমেল চার্টটাকে রেফার করব। এবার হচ্ছে কি, এতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আর কি দেখতে পাচ্ছি না। যদি এটা ফিমেল হয়ে থাকে, রেডিয়াল হেডটা অ্যাপিয়ার করেছে, তো অ্যাবভ 6 ইয়ার্স, অ্যাবভ 6 ইয়ার্স। এবার ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলটা অ্যাপিয়ার করেনি, বিলো 10 ইয়ার্স। ঠিক আছে, এর মাঝামাঝি কি আছে? কিছু নেই, 6 to 10 ইয়ার্স। ওলেক্রানন প্রসেস অ্যাপিয়ার করেনি। ঠিক আছে, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল অ্যাপিয়ার করেছে, ফিউজ করেনি। অ্যাপিয়ার করে 5 ইয়ার্সে, ফিউজ করে 14, অ্যারাউন্ড 14। ঠিক আছে, অ্যাপিয়ার করেছে, নট ফিউজ। সো এজ ইজ 6 to 10 ইয়ার্স, অ্যাবভ 6 and below 10 years as lateral epicondyle has not appeared. বোঝা গেছে? এইটা কি বলো, এটা ক্যাপিটুলাম। এটা কনফিউজ করবে না মিডিয়ালের সঙ্গে, ল্যাটারালের সঙ্গে, ক্যাপিটুলাম এটা। ঠিক আছে, বোঝা গেল? এবার আর একটা স্লাইড করব। আলনা যেদিকে থাকবে সেদিকটা মিডিয়াল হবে। আলনা যেদিকে থাকবে, এই আলনা যেদিকে থাকছে মিডিয়াল হচ্ছে। এটা বোঝা যাচ্ছে তো? রেডিয়াসটা ল্যাটারাল হয় আর এটা মিডিয়াল হয়ে গেল। ঠিক আছে, as nothing is stated, then it is of a female. If something has been stated, মানে তাহলে we can say whether it is of male or not. যদি কিছু না দেওয়া থাকে, we will consider it as female.
So let's estimate radial head appeared not fused less than 14, above 6. Right? Medial epicondyle appeared but not fused. আবার সেই ওই 14 এর কাছাকাছি. Lateral epicondyle has appeared, so above 10 years. And তাহলে tip of olecranon process has appeared 9 years, ঠিক আছে, not fused. Fused কখন হচ্ছে 14, তাই তো 15, ঠিক আছে. So the age would be above 10, below 14, above 10, below 14. হচ্ছে? কারো ডাউট আছে কেন হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারো, আবার বোঝাবো, ঠিক আছে. So in the chart what is most visible is the radial head. Radial head আমরা দেখছি, radial head appear করেছে, radial head had appeared but not fused, so above 6 years, ঠিক আছে. তারপরে আমরা কি দেখলাম, radial head এর পর এইদিকে কি আছে, lateral epicondyle has appeared করছে কখন, 10 years এ, so হয়ে গেল কি above 10 years. ফিউজ করে কখন, 10 to 12, ঠিক আছে, ফিউজ করেনি. another thing is that এটা কোন, এটা কি আছে বলো, medial epicondyle has appeared but not fused, তাহলে 14, তাহলে above 10, below 14. It can be narrowed down, it can also be narrowed down as lateral epicondyle এর fusion কখন হয়, when does lateral epicondyle fuse, 10 to 12 years, so it can fuse by 12 years, so you can say below 12, so above 10, below 12. Okay, if you narrow it down, otherwise 10 to 14 is also okay. হয় এটা, okay, let's do it. Radial head has appeared, not fused, above 6. Okay, medial epicondyle appear করেছে, করেছে, করতে হবে, ওটা 5 বছরে হচ্ছে, ঠিক আছে, হালকা আছে. রেডিয়াল হেড অ্যাপিয়ার করছে তো অ্যাবভ 6, এবার ওলেক্রানন প্রসেস অ্যাপিয়ারস এট 9 to 12, তাহলে এটা অ্যাপিয়ার করেনি, তো বিলো 12 হয়ে গেল, above 6, below 12. এবার কি আছে এখানে, lateral epicondyle কত বছরে, less than 10, তাহলে 6 to 10 এর মোটামুটি আসছে, হলো 6 to 10, হ্যাঁ অ্যাপিয়ার করেনি, তাহলে 9 to 12 এ অ্যাপিয়ার করে, তো 12 আর এখানে আমরা 10 পাচ্ছি, যখন ওটা আমরা বললাম তো বিলো যখন বলবো তখন সঙ্গে সঙ্গে ওটা হয়ে যাবে বড় ফিগারটা, ঠিক আছে. whenever we say below something it will be the bigger figure if it is in a bracket. বোঝা গেল না, ধরো তোমাদের এজ দিতে হবে above এত, below এত, so take it as above x to y to below m to n, ঠিক আছে, above x to y to below m to n, so you will take x and n, মাঝের গুলো নেবে না, দুটো এক্সট্রিম নেবে,
x to y to m to n যদি above x to y and below m to n মানে age bracket x y টা হবে তোমার মানে নাম্বারস, ঠিক আছে? x to y above x to y to below m to n, তাহলে এদিকের x নেব আর ওদিকের n নেব, x আর n, n for নেপাল, ঠিক আছে? x for x-ray, দুটো এক্সট্রিম নেব, ওকে? সেই জন্যই আমরা যখন বিলো বলছি, যেখানে এজ ব্র্যাকেট 9 to 12 ছিল, তো আমরা বড়টা বিলোর সময় আমরা বড়টা নিচ্ছি, ঠিক আছে? বিলো 12। কিন্তু আমাদের এখানে আর একটা ফিগার আছে যেটা 10 ইয়ার্স এর আছে, তাই তো? ওটা অ্যাপিয়ার করেনি, তো 6 to 10 বোঝা গেছে? চলো এবার আমরা একটা এক্স-রে সলভ করব ফিমেলের থেকে। ফিমেলে অসিফিকেশন আর্লিয়ার, মেলসের একটু লেট হয়, about 2 years. So in that slide the age has already been mentioned, okay? So this x-ray was taken at our hospital. So here the stated age is, কত লেখা আছে, এজ কত লেখা আছে? 15 years তো? So tell me how it is 15 years of age. First refer the male ones, male gallstone chart এ male এর ওটা দেখো, ওতে দেখবে 15 ইয়ার্স এর রেঞ্জে কি থাকে মেলে? রেডিয়াল হেড অ্যাপিয়ার করছে কখন? 8 years, 16 years এ। So in that x-ray the radial head is almost fusing, okay, almost fusing, but you can see the other parameters like the medial and lateral epicondyle, ওগুলো কখন ফিউজ করছে দেখো, appeared both আর ফিউজ কখন করছে? 16, almost 16, সবকিছু দেখবে প্যারামিটার 16 এ আসছে, ঠিক আছে? সো বিলো 16 বোঝা গেল, সেই জন্য ওটার এজ অলমোস্ট অ্যাকুরেটলি ওই এজ ব্র্যাকেটে আসবে। অ্যাবভ কততে আসছে তাহলে? বিলো 16 তো হলো, বিলো না আরো হবে, আরো আগে হবে। ওই ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল অ্যাপিয়ার করছে কখন? 12, ওকে। সো অ্যাবভ 12, আর ওই এটা দেখো টিপ অফ ওলেক্রোনন প্রসেস, সো 12 is the nearest value, তাই তো? সো অ্যাবভ 12 ইয়ার্স, বিলো 16 ইয়ার্স, বোঝা গেল? এজ সাবজেক্টের এজ হচ্ছে 15 ইয়ার্স, ঠিক আছে? উই আর উইদিন দি ব্র্যাকেট। সো এইভাবেই আমরা এস্টিমেট করব। সো ইন এক্সাম we will not give it like this, we will give the x-rays, okay? So from x-rays we will how you have learned how to estimate the age. So this was for elbow joint. Next we will learn about pelvis. Wrist joint has been taught before, so we are left with the topic pelvis. pelvis এর x-ray থেকে কি করে আমরা age estimate করি, ঠিক আছে? এটা বোঝা গেল কি করে করতে হয়, হ্যাঁ? বিলো 16 ওটা তোমাদের ওই আগে মেলের গলস্টোন চার্টের মেলটাকে দেখো। সো দি ফিউশন হ্যাজ নট হ্যাপেন্ড, যে কোনো মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, all of those have not fused, huh? No, it will be above 12, below 16 years. Huh? Tip of olecranon process has appeared. Everybody listen please. That x-ray is of a male subject, okay? So you don't have to look at the x-ray, I will tell you. In that x-ray, medial epicondyle has appeared. Medial epicondyle has appeared but not fused. Medial epicondyle has appeared but not fused means it's above 7 and below 16. Okay,
Second parameter was the lateral epicondyle. Lateral epicondyle also appeared but not fused. So above 12, okay, above 12, below 16 till now. Tip of olecranon process has appeared, not fused. So 11 to 13 years, but better value is the lateral epicondyle above 12 years. Radial head appeared, not fused. So it 8 years appear kore, 16 years se fuse kore. So we have this 12 and we have this 16. So age is above 12 and below 16 years. Clear? Hoche? So that was that X-ray. Fine? That's why in the findings part, jeta boli, finding part e likhbe appeared hoyeche not fused, appear hoyeche not fused. তাহলে আমার ওইটা দেখারও দরকার হবে না, জাস্ট ওই ডেটাকে নিয়ে আমরা এখানে কম্পেয়ার করে আমরা এজ এস্টিমেট করতে পারবো। ওকে, so what were the three parts? First you have to write it is a skygram of elbow joint, so right or left, in which view, anterior posterior view or and lateral view, and showing which joints. এগুলো লেখার পর এক্স-রে ফাইন্ডিং এ ওই চারটে জিনিস, medial epicondyle, lateral epicondyle, tip of olecranon process and radial head. Our third part is opinion. So opinion e ki likhbe, taking all the data, means taking all of the points into consideration. I am of the opinion that the subject's age is above with eto years and below eto years. ঠিক আছে, দিয়ে শেষ হবে। আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে পারো, you should add on the date and time of examination. ঠিক আছে, on the date and time of examination এই আমার means এটা আমার opinion. Okay, in that opinion part only. So this completes your elbow joint. Next we will learn another topic, maybe pelvis. Okay, so CR Cash, please take the attendance.